Hi all, in the previous videos we talked about the Indus Valley Civilization, how it got started around 2500 BC towards the 1750 BC. The important fact of Indus Valley Civilization or Harappa Civilization was that it started along the Indus River, the river which is more prominent at that time in Indian subcontinent. Also, the most of the part of the river that flows in Pakistan, in present Pakistan, also it flows in India, but its tributaries are mostly there in Pakistan. Its tributary merges with Indus and then it flows in the Arabian Sea. UPSC has asked numerous type of questions related to Indus River, their tributaries. Also, they have asked numerous type of questions in their prelims about Harappan civilization. One of the topic that today that we are going to cover is religious practices of Harappan civilization. Remember, in Harappan civilization, there were numerous facts and figures which we collected, and we have seen that how the society was behaving, how the society was approaching towards a religious culture. So let's see. In Harappa, numerous terracotta figurines of women have been found. What is this terracotta? Terracotta is nothing but it is a kind of मिट्टी पकी हुई मिट्टी या फिर आप उसको चिकनी मिट्टी बोल सकते हो उससे फिगर्स बनाते थे ये जैसे पॉट के स्ट्रक्चर बनाया विमेन के स्ट्रक्चर्स बनाया ये काफी फेमस था दिस थिंग वाज वेरी मच फेमस in the Harappan culture. In one figurine, a plant is sown growing out of the embryo of a woman. So probably the image represents the goddess of the earth. So what they are trying to depict? They are trying to depict is that they must be worshipping nature. They must be worshipping nature, not the real idol worship, but they were worshipping the nature in the form of mother goddess because the society was like that. They were settled around the banks of the Indus River. They were totally dependent on the river, the soil for their growth and survival. So they were worshipping those natural elements. So it was intimately connected with the origin and growth of the plants that the Harappans therefore looked upon the earth as a fertility goddess because the earth was providing them food in the terms of agriculture. The earth was providing water in the forms of the river. So they were worshipping the earth goddess. And also in the same manners, when we compare this Harappan civilization or Indus Valley civilization with Mesopotamia civilization or Egyptian civilization, though those civilizations were contemporary, ये आपस में उसी वक्त के सिविलाइजेशन है आपको दिखता होगा कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन में जो नाइल गॉडेस है उसकी वर्शिप की जाती थी और पूरी की पूरी जो सोसाइटी थी वो कहीं ना कहीं मैट्रिarchal सोसाइटी थी in Egypt the daughter inherited the throne of the property that was not seen anywhere in the Harappan society but in the Egyptian civilization the importance of daughter was very much but there were slight differences between the Harappan civilization and the Egyptian civilization that the author is talking about. Some Vedic text also shows reference to the earth goddess, although she is not given any prominence. When we talk about the Vedic texts, आपको पता होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हमारा अर्ली वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम 1750 BC टुवर्ड्स तो जब अर्ली वैदिक पीरियड आता है और लेटर वैदिक पीरियड उसके बाद आता है तो अर्ली वैदिक पीरियड में वी हैव ऑलवेज heard that we worshipped गॉड इन द फॉर्म ऑफ नेचर उसमें अग्नि की पूजा होती थी इंद्र की पूजा होती थी वरुण की पूजा होती थी ये गॉड की पूजा होती थी ये गॉडेस की पूजा होती थी उषा की पूजा होती थी तो उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में वी स्टार्टेड वर्शिपिंग शिवा लाइक दैट एंड फिर धीरे धीरे जो हमारे अर्ली वैदिक पीरियड में नेचुरल नेचर रिलेटेड गॉड्स थे उनको हमने धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में रिप्लेस कर दिया तो अभी हम आगे और देखेंगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है इन द
field of religious. So some Vedic text shows reference to the earth goddess, although she is not given any prominence. It took a long time for the worship of supreme goddess to develop in Hinduism. Only from the 6th century, ये देखिए बहुत important point यहाँ पर लिख रहा है कि only from the 6th century AD, only from the 6th century AD, one minute, hello, sorry, there was a call. So only from the 6th century AD, we saw that we started developing mother goddess such as Durga, Amba, Kali, Chandi as a idol worship in Hinduism. तो ये कितनी बाद की बात है, आप देखो BC, उससे भी 2500 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन था, बिफोर क्राइस्ट। और ये BC के बाद आता है AD, उसमें भी 6th AD, मतलब 6000 साल लगभग बाद। आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है कि हमने आइडल वर्शिप स्टार्ट किया इन द फॉर्म ऑफ दुर्गा की पूजा। मतलब इस टाइम पे तो कोई दुर्गा की पूजा ही नहीं थी, अम्बा की पूजा ही नहीं थी, काली की पूजा ही नहीं थी। लेटर ऑन वी शिफ्टेड टू आइडल वर्शिप। ऑल्सो इन द पुराणास एंड इन द तंत्रा लिटरेचर, इन कोर्स ऑफ टाइम एवरी विलेज केम टू हैव इट्स सेपरेट गॉडेस। नाउ द मेल डीटी इन द इंडस वैली। अभी ये जो मेल डीटी की बात कर रहा है कि एक पशुपति सील मिला था, जिससे हम ये रिलेट कर सकते हैं कि शिवा की वर्शिप उस टाइम पे होती थी, जो ओनली आज के प्रेजेंट गॉड में रिलेवेंट है। आज जो हम शिव की पूजा करते हैं, इस काइंड ऑफ शिव टाइप का एक यौगिक स्ट्रक्चर हमें मिलता है पशुपति सील के नाम से, जिसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग भी पूजा करते थे। तो उसके बारे में इन्होंने बता रहा है कि एक सिटिंग पोस्चर में एक योगी था। प्लेसिंग वन फुट ऑन द अदर, द गॉड इज सराउंडेड बाय एन एलिफेंट, a tiger, rhinoceros, and a buffalo below his throne. At his feet appear two deer. The scale immediately recalls to our mind the traditional image of Pashupati Mahadeva. तो ये कितने ओल्ड है। महादेव की पूजा उस टाइम भी होती थी इन द फॉर्म ऑफ रुद्रा इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉट एज शिवा। तो उसे हम प्रोटो शिवा भी बोलते हैं। अभी इसको हम डिटेल में लास्ट स्लाइड में मैंने वो इमेज कैप्चर कर रखा है, आपको दिखाऊंगा। The four animals surrounding the god look towards the four directions of the earth. They may have served as vehicles for God, because in later Hinduism, every god is supposed to have his own convenience for his movements. तो मे बी ऐसा रिजम्बलेंस है कि गॉड का अपना व्हीकल होता था हिंदुइज्म में। In addition to those use of image of Shiva, we also come across the prevalence of phallus worship, one of the important point. They were worshipping very important organs of human body, and that was called phallus worship, which becomes so intimately connected with Shiva in later times. Numerous symbols of phallus and female sex organs made of a stone have been found in Harappa. So they were worshipping the reproductive organs from where the uh, birth is getting generated in the form of land, in the form of uh, fertility goddess earth, in the form of uh, reproductive organ of a female sex organ. They were possibly meant for worship. अब देखिए, the Rig Veda speaks of the non-Aryan people who were phallus worshipper. हमने ये बात हमें ऋग वेदा में भी दिखती है। जब हम अर्ली वैदिक पीरियड कवर करेंगे आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उसमें हम देखेंगे कि ऋग वेदा के टेक्स्ट में नन आर्यन पीपल के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि phallus worshipper थे। द phallus worship which started in the days of Harappa came to be recognized as a respectable form of worship in the Hindu society as an sign symbol worship. उसका मीनिंग काफी डीप है हिंदुइज्म में। इट्स जस्ट नॉट रिलेटेड टू दैट सेक्सुअल टाइप ऑफ ऑर्गन, बट एज ए साइन, एज ए, जैसे मैं प्रेयर कर रहा हूँ तो मुझे एक सिंबल चाहिए प्रे करने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ट्री एंड एनिमल वर्शिप। द पीपल ऑफ इंडस रीजन ऑल्सो वर्शिप ट्रीज। द पिक्चर ऑफ ए गॉड इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए सील इन द मिड्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द पीपल। पीपल ट्री की भी पूजा करते थे। तो मतलब अब आपने देखा, ये नेचुरल एलिमेंट्स की पूजा कर रहे हैं, रिवर की पूजा कर रहे हैं, अर्थ की पूजा कर रहे हैं, ट्री की पूजा कर रहे हैं। The animals were also worshipped in Harappan times. The most important of them is hummed bull. आज भी आप देखोगे कितना एविडेंट है, नंदी की पूजा करते हैं हम हिंदुइज्म में।
जब शिव की पूजा करते हैं तो उसके साथ नंदी की भी पूजा करते हैं. नंदी इज अ बुल. So such a bull passes in the market streets, the pious Indians give way to it. उसे रास्ता देते हैं. Similarly, the animals surrounding Pashupati Mahadeva indicate that these were worshipped. Obviously, the inhabitants of Indus region worship gods in the form of trees, animals, and human beings. But the gods were not placed in temples. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन और अभी के वर्शिप में हिंदुइज्म. क्या है कि हम उस वक्त भी पूजा करते थे, लेकिन हमने अपने टेम्पल्स में आइडल्स नहीं बनाए थे. वी वर जस्ट वर्शिपिंग देम इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, विच वाज कॉमन इन एंसेंट इजिप्ट भी और मेसोपोटामिया जो कि ईरान था उस वक्त का. तो ये दोनों जगह आपका कॉमन था ये फीचर्स. नॉर कैन वी से एनीथिंग अबाउट द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द हरप्पन्स विदाउट बीइंग एबल टू रीड देयर स्क्रिप्ट. एमुलेट्स कहते हैं ताबीज को, वो भी ताबीज भी फाउंड की गई है लार्ज नंबर्स में. प्रोबेबली द हरप्पन्स बिलीव दैट द घोस्ट्स and the evil forces were capable of harming them, therefore they used amulets ताबीज against them. the अथर्व वेदा जो कि ऋग वेदा के बाद की पुस्तक है उसमें भी हम कंसिडर करते हैं कि many charms and spells recommends amulets for warding of diseases and evil forces. तो कहीं ना कहीं हमें देखने को ये मिलता है कि the people of Indus Valley Civilization or Harappan Civilization were worshipping the god in the form of natural elements. They were not idols were not placed in the temples, but still they were worshipping a yogic posture, which you can resemble with the Lord Shiva. And also, the animals were worshipped. The natural elements were worshipped. The next slide is of Pashupati Seal that was discovered in the Indus Valley Civilization at Mohenjo-Daro. If you look carefully into this seal, you will see this yogic man sitting, spreading his legs, and animals are surrounded by him. This is tiger, this is buffalo, this is rhino, and this is elephant, which we talked earlier. And two deers is also shown at his feet. It features one of the most intricate designs among the thousands of seals. There were numerous thousands of seals, but this seal, Pashupati seal, is the most important, most pivotal seal of the Indus Valley Civilization. It is also known as the oldest images of Hindu God Shiva, that is called Proto Shiva deity, as Pashupati. पशुपति नाम से हम शिवा की आज भी शंकर भगवान की पूजा करते हैं, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स. तो ये वीडियो was totally on the religious factors of Indus Valley Civilization. Hope you enjoyed it. Thank you.